ओके, तो फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि आप किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में लिखते हो, उसका फॉर्म बदल देते हो, एंड दैट मस्ट हैव सम एडवांटेज, अदरवाइज व्हाई यू विल डू दैट। अगर मान लो तुम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फॉर्म में लिख रहे हो, तो उसका कुछ एडवांटेज भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैन है, ये एक स्पेस में है, और दूसरे स्पेस में तुमने कन्वर्ट किया और ये बन गया कोई एनिमल। दो ही पैर हुए ना। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्पेस, दिस इज सेकंड स्पेस। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, इसका अगर कोई एडवांटेज होगा तो ही ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, नहीं तो व्हाई यू विल डू दैट ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो पॉइंट। सो ऐसे ही कोई फंक्शन होगा, उसको हम किसी दूसरे स्पेस में लिख देंगे तो उसका शक्ल बदल जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, एंड दैट विल हैव सम एडवांटेज। लाइक आप जैसे भेष बदल लेते हैं, तो भेष बदलने का कोई फायदा होना चाहिए, तभी तो भेष बदलोगे। ठीक है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना इज फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन भेष बदलने का फायदा तभी है जब तुम वापस भी आ सको जब जरूरत हो, दैट विल बी इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर वापस नहीं आ सकते तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर किसी डेफिनेशन से तुम इस फॉर्म में जाओगे, तो ऑब्वियसली बिकॉज तुम किसी डेफिनेशन से गए हो, इसलिए तुम वापस भी आ सकते हो। अगर कोई डेफिनेशन नहीं है, रैंडम है, तो आप वापस नहीं आ सकते। जैसे मान लो तुमने कोई फंक्शन दिया एफ एक्स, और मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो बाय डेफिनेशन मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ। तो मुझे पता है कि मैं स्क्वायर से आया हूं, तो वापस रूट लेके मैं वापस आ सकता हूँ। लेकिन मान लो तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने मुझसे कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करो एक्स का, मैंने मन में ही उसका एक्स टू द पावर 1/9 कर दिया है, तो तुम्हें कैसे पता। ठीक है, तो this is the transformation, this is inverse Fourier transformation, it has got lot of applications। तो पहला तो एनालिसिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एनालिसिस टूल। कोई भी फंक्शन जो है वो सपोज यहाँ पे टाइम स्पेस में है, तुमने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी स्पेस में चला गया। ठीक है, दिस इज टाइम स्पेस, दिस इज फ्रीक्वेंसी स्पेस। तो इसका यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टीज जो आपको समझ नहीं आ रही थी, वो यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रोनाउंस्ड होके दिखाई देने लगेंगी। जैसे कि मान लो कोई वेरिएशन था, उस फंक्शन में कोई वेरिएशन था जो यहाँ नजर नहीं आ रहा था, और फ्रीक्वेंसी स्पेस में वो बहुत अच्छे से नजर। फिर हम इस तरीके की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यहाँ पे देख के इसका ओरिजिनल का अंदाजा हो जाता है। जैसे कि जो हार्ट के डॉक्टर हैं, वो आपका स्कैन देखते हैं, तो वो जो सिग्नल है वो ओरिजिनल नहीं है ना। ओरिजिनल सिग्नल में वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो अगर मान लो सिर्फ सीधा सीधा ओरिजिनल फंक्शन का प्लॉट कर लिया जाए, तो वो वेरिएशन पढ़ा नहीं जा सकता। बट फिर आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको, उस सिग्नल को पढ़ लेते हो, और तुम्हें पता है यहाँ पे ये हो रहा है तो ओरिजिनल में ये है। आर यू गेटिंग इट और नॉट। तो इसी सिग्नल के पढ़ने से, तो इसलिए यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा ये है कि साथ ही साथ दोनों एनालिसिस होती चली जाती है, साइमल्टेनियस एनालिसिस ऑफ द सिग्नल कैन बी डन, राइट। और इसकी एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम ब्रिघम है, और दैट इज जस्ट लाइक गीता ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। कभी आपको अगर स्पेलिंग शायद थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट आई होप कि करेक्ट हो। ब्रिघम, ओके, सेम जगह पे पड़ी हुई है। ओके, सो मैं ये फॉलो करता हूं इस चैप्टर के लिए। एनालिसिस टूल, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस,
राइट? प्रिंसिपल एनालिसिस टूल, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, simulations, many more applications. So जितनी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हो, जो कि कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उनमें कई बार तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन तुम फटाफट उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हो और बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेते हो। ठीक है? तो ये जितने सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो पा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स में, उन सब में फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का अपना बहुत बड़ा रोल है। ठीक है? अब हमारा पढ़ने का मोटिव क्या है, ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो अ, हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा बैंडविड्थ क्या होगा, कितना हमें पढ़ना है। ठीक है? तो एक तो जो है वो बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़ने हैं हमें, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखना है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखना है, प्रॉपर्टीज सीखनी है, और कुछ एग्जाम्पल तो मैं जरूर दूंगा जिसमें कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो फिलहाल हमारा मोटिव बड़ा ही छोटा है। जिस हिसाब से फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूजफुल है, उसके मुकाबले जो सिलेबस है हमारा वो बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। बट ठीक है, तब भी आपको काफी मजा आएगा फंडामेंटल सीखने में। ओके? तो इसके मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इट शुड बी फॉलोड बाय सम डेफिनेशन। सो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज देयर आर मैनी डेफिनेशंस, देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। यूसेज के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से लोग बहुत तरीके की डेफिनेशंस यूज करते हैं, लेकिन एक बार डेफिनेशन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की फिक्स हो जाती है तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी फिक्स हो जाती है। सीइंग द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वी विल राइट द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करूंगा। आई विल यूज स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एग्जाम में आप कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे? गिवन होगी, वेरी गुड। ये नहीं कि तुम कहो कि सर की तो यही डेफिनेशन थी, रिजिड नहीं होना है। तो एग्जाम में कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है? द वन दैट इज गिवन। इफ इट इज नॉट गिवन, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन सच अ मैनर, they asked what is the proportionality, what is the graph, such things which will not depend on the definition. Okay? So इसीलिए आप अलग अलग बुक्स उठाओ, किसी में 1/√2 मिलेगा, किसी में √2/π मिलेगा, किसी में 1/√2 मिलेगा, तो और किसी में नहीं मिलेगा, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार, which one is correct. So what is the answer? All of them are correct, right? So मैं ये ब्रिघम वाली डेफिनेशन यूज करूंगा, दैट इज स्टैंडर्ड वन दैट गोज वेल विद पार्सेवल्स, जो मैंने फूरियर सीरीज में भी बताया था ना। पार्सेवल्स याद है या भूल गए? पार्सेवल्स आइडेंटिटी, सो इट गोज वेल विद दैट आल्सो। और जो डेफिनेशन है वो टाइम और स्पेस दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे, और दोनों के लिए हमें क्वेश्चंस भी करने होंगे। टाइम के लिए भी क्वेश्चंस करने होंगे और स्पेस के लिए भी क्वेश्चंस करने होंगे। ओके? सो सपोज एच टी इज अ फंक्शन, मैथमेटिक्स को इससे लेना देना नहीं है कि टी टाइम है या क्या है, वेरिएबल ही है, राइट? सो बट वी आर, बिकॉज वी आर
डिस्कसिंग मैथमेटिकल फिजिक्स, तो हमारे अंदर तो वो एलिमेंट आ ही जाता है कि टी है तो टाइम के तरीके से सोचें, ओमेगा है तो फ्रीक्वेंसी के तरीके से सोचें। अदरवाइज इफ यू read this as a pure mathematician, you don't need to go into those details, आपके लिए बस वो दो वेरिएबल्स हैं, राइट? तो एच टी मान लो कोई फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं स्मॉल एच लिख रहा हूं और जब कैपिटल एच लिख रहा हूं तो दोनों अलग अलग फंक्शंस होंगे, राइट? तो स्मॉल एच का जो फॉर्मुलेशन है वो कैपिटल एच का नहीं होगा। तो एच टी एक फंक्शन है और इसका फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए मैं ये एरो यूज करूंगा, एंड दैट इज गिवन बाय एच एफ। ब्रिगम में एक बेंजीन रिंग टाइप का बना था, मैंने सोचा उतना क्यों बनाना है, ऐसे सिंपल बना देता हूँ, ठीक है? तो क्या यहाँ बीच में इक्वल लिख सकते हैं? नो, मैन इज नॉट इक्वल टू दैट एनिमल, ठीक है ना? बट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो इक्विवेलेंट का बना सकते हैं ना, क्योंकि ये यहां से एनिमल बना है तो एनिमल से मैन भी बन सकता है, राइट? सो एच टी इज, बोलो जरा, फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच टी इज एच एफ, फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच एफ इज एच टी। तो किसी भी एक तरफ को अगर फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन कह लोगे तो दूसरा अपने आप इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो क्या स्मॉल एच और कैपिटल एच का फॉर्म सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, फॉर्म ही तो बदलना है, मैन इज कन्वर्टेड इनटू एनिमल, ठीक है ना? तो फॉर्म ही चेंज करना है। सो अब डेफिनेशन की बारी है कि which definition to select, तो that I am writing hf will be equal to integral minus infinity to plus infinity ht e to the power minus j 2 pi ft and dt। तो मैं यहां कोफिशिएंट 1 ले रहा हूं, तो इसके आगे वाले कोफिशिएंट अब देखो जरा, j is under root of minus 1, j is under root of minus 1। सो आई नहीं यूज कर रहा बिकॉज एक्चुअली Fourier transformation is used by electrical engineers, so वहां पे आई करंट है तो इसलिए तो इसलिए मैंने भी वही पिक कर लिया है। बट आप दिमाग में रखो कि हम लोग आई भी यूज करते हैं, आयोटा, राइट? सो एच एफ हो गया इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एच टी ई टू द पावर माइनस जे टू बाई एफ टी डी टी। और इसको देख के हम इनवर्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे एच टी, and it will be equal to minus infinity to plus infinity hf e to the power minus j 2 pi f t and df। अब जरा एज ए मैथमेटिशियन सोचो, जब t में लिमिट लगेगी तो t गायब हो जाएगा, ये किसका फंक्शन बन जाएगा? f का। जब f में लिमिट लगेगी तो फाइनली f गायब हो, जिसमें लिमिट लगती हो तो गायब ही हो जाता है। जब f में लिमिट लगेगी तो f गायब हो जाएगा, ये किसका फंक्शन बन जाएगा? t का फंक्शन बन जाएगा। So this we will call Fourier transformation and this we will call inverse Fourier transformation, right? Now two Fourier integrals I will use directly। अब इसको कई लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि पहले ही चार्ट बनवा देते हैं, इसका Fourier transformation ये है, इसका ये है, उससे आपको कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे भाई कि Fourier transformation functions के निकाले तो जाएं पहले। तो अच्छा, दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो A1 A2 है, A1 A2, ये मैं ले रहा हूं पहला, A1 is 1 and A2 is 1, ठीक है? तो
A second is a1 is 1 by 2 pi and a2 is 1. Third is a1 is 1, a2 is 1 by 2 pi, and fourth is a1 is 1 by root 2 pi and a2 is 1 by root 2 pi. These are some definitions. Because transformation है तो you may throw your own definition, right? So this is the chapter which belongs to integral transformation. Integral के help से आप transformation कर रहे हो, right? So this will fall in the category of integral transformation. ठीक है? Integral के help से आपने function को transformation कर दिया. So this will be called integral transformation. यहाँ minus है, यहाँ plus. If minus is here, you will have plus here. If plus is here, you will have minus here. Okay, thank you. Now there are some integrals which I call Fourier integrals that I will be using in this chapter. और उसको मैं क्यों ना पहले ही बता दूं, उसको हम लोग frequently use करेंगे उन integrals को, ठीक है? So first one is integral minus infinity to plus infinity e to the power minus j 2 pi f minus f0 t dt. This integral will be delta function f minus f naught. And if you have integral minus infinity to plus infinity to the power j 2 pi f plus f naught t dt, then it will be equal to delta function f plus f naught. So these are the two integrals that I will be using throughout the chapter. And just to recapitulate, because delta function आ गया है, तो let us quickly revise in a very short that what is delta function and what are the properties, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी आता रहेगा, तो आप सबको पता है, but let me revise it quickly. Okay, so delta function, so like any other function, this is also a function. तो इसमें कोई बहुत स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे डेल्टा फंक्शन आता है तो we start thinking something abstract, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है. Like any other function, this is also a function. तो पहले तो ये सोच के चलो. And how we define it, let me quickly tell you that suppose this is some point and about this we have a function like this. Okay, और ये मानो कि this is B and this is A, and let us consider the area which is A into B is 1. Let suppose unit area ये cover कर रहा है. This graph is covering unit area. Okay, now if this graph is covering unit area, then keeping this area constant,
I want to squeeze this towards this point, and suppose this point is some x naught. This is x-axis. This point is some x naught. So what will happen? I want to take b very, very small. And when I say small, think about, let's say 10 to the power minus 5, a very small number. So to keep area same, a will become very large. It will become 10 to the power 5. So that means this will become about x naught. This will become like this. Yes or no? Yes. And still the area covered here was 1, and still the area covered is 1. So in the limit, so this is very small numbers, but ideally if I go for b very small, a will become very large. So mathematically, what is very small? It is 0. And what is very large? It is infinity. So mathematically, this is very small number, this is very large number. So जैसे ही आप ये बनाते हो, we call this function as delta function. We call this function as delta function, right? And this delta function can be represented in many ways. You have seen in your books. Sometimes they make it like this, as a, right? But sometimes we make it like this. We are lazy people. We don't want to draw much. We can make it like this. This is also delta function. And sometimes even we don't bother to put this cap. This is also delta function, right? So these all are delta functions, and we write it like this: delta of x minus x naught. So please understand, the function which was here, fx versus x, is still the same function. You have just provided a limit to it. आपने just क्या दे दिया है? एक लिमिट दे दिया है, और इसका नाम क्या है? fx, और इसी का नाम डेल्टा फंक्शन है. तो जब आप अंदर वाले को जीरो करोगे, that will tell you the position of the delta function. If you put this equal to 0, so ये जो delta ब्रैकेट में x minus x naught लिखा है, that tells you the position that it is x naught. Are you getting it? So just by the very nature of the delta function, तो delta function क्या है? किसी पॉइंट पे है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, बट उसका एरिया स्टिल 1 है. तो पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि उसकी हाइट को तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, इंफिनिटी है. लेकिन उसके एरिया को हर जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि वो 1 है. और 1 क्यों लिया गया है? ताकि किसी से मल्टीप्लाई हो तो उसके मैग्नीट्यूड को ना चेंज करे. जैसे आपके पास जितने रुपए हैं, मैं उसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो उतने ही रुपए रह जाएंगे. आप मैं कहूं कि भाई आपके अकाउंट में जितने रुपए हैं, उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो अगर मैं कहूँ 1 से करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करोगे ना, क्योंकि वो सेम ही रह जाएगा एटलीस्ट. मैं कह दूं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 1 है तो हम बहुत जगह इसको यूज कर लेंगे. कहीं चार्ज डेंसिटी के तरीके से यूज कर लेंगे, कहीं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की तरह यूज कर लेंगे, कहीं कुछ. तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस. नाउ the first property that I told you can be immediately written, that can be immediately realized in this form. Because you have not forgotten that area is still 1. So if I take an integral and put this function, which is delta function,
I want to calculate the area and I will put the limit just right and left of this x naught, क्योंकि बाकी जगह तो ये zero ही है. So this will be equal to 1. This is very important property. And safely, if you want to write minus infinity to plus infinity delta x minus x naught dx, this will be equal to 1. Because now this limit will be minus infinity to plus infinity, and 100% x naught is going to come in between. If you are traveling from minus infinity to plus infinity, this area 100% you are going to capture. So this is another property. And if you multiply by a function, then also same thing is going to happen. Everywhere you will have the value equal to 0 except at x is equal to x naught, where the area will become 1. So you will write minus infinity to plus infinity fx delta function x minus x naught dx. This will be equal to fx naught. This is equal to fx naught. क्योंकि हर जगह ये इंटीग्रल 0 0 0 0 होता जाएगा. जैसे ही x नॉट पे पहुंचोगे ये कांस्टेंट बन जाएगा, इंटीग्रल से बाहर निकल जाएगा और बचे हुए की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसलिए fx नॉट हो जाएगा. राइट? तो this was little background of delta function. There are many other properties. Actually, I take a separate class on delta function. That is in our menu. Delta function की अलग से और भी प्रॉपर्टीज हैं और भी चीजें हैं, बट इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. Is this okay? Perfectly fine. So अभी तो हमारा पर्पस कुछ और था, बिकॉज वो इंटीग्रल आ गया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डेल्टा फंक्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया. राइट? Now to begin with, we should take some very simple Fourier transformation. शुरुआत जो करनी चाहिए ना, पहले हल्की फुल्की बॉल्स को खेला जाए. तो सबसे पहला फंक्शन जो मैं कंसीडर कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल. लेट मी टेक एच टी इज इक्वल टू 1. और इफ यू वांट यू कैन टेक इक्वल टू सम कांस्टेंट k. राइट? दोनों एक ही बात हो गई ना. k will be equal to 1. This k is not that k. Okay, कुछ और ले लो चाहो तो. क्या ले ले? अल्फा, अ कांस्टेंट. इसका फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है. फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. तो पहले तो मैंने क्या बोला था? साइमल्टेनियस विजुअलाइजेशन ऑफ द फंक्शन एंड इट्स फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन. अभी मैं बहुत अप्लाइड नहीं पढ़ा सकता, बट मैं अभी आइडिया देना चाहता हूं आपको कि दैट साइमल्टेनियस विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So we should have the graph of this function also and its Fourier transformation also. So if you plot this, plot the graph of this constant function st and t, it will be alpha everywhere. It will be alpha everywhere because it is constant. And if I put the Fourier transformation definition, hf will become minus infinity to plus infinity alpha e to the power minus j 2 pi ft and dt. And this will become
अल्फा, अब देखो जरा, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2f 2 pi f minus 0 t, can I write it like this? So it will become alpha delta function t minus f minus f0। मैंने आपको पहले ही इंटीग्रल्स लिखवा दिए हैं। तो जो अल्फा है इसका फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन है डेल्टा, अल्फा टाइम्स डेल्टा फंक्शन f माइनस एफ नॉट, राइट। सो दिस इज द फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो अब ये रियल स्पेस में ऐसा दिखता है, एंड फुरियर स्पेस में अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज सपोज पोजीशन एफ नॉट, एंड दिस इज द फुरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट्स एरिया विल बी अल्फा। ये हाइट नहीं है, हाइट तो इनफाइनाइट है। व्हाट इज अल्फा? इट्स एरिया। तो अगर वो 1 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता। तो रियल स्पेस में जो चीज रिप्रेजेंट करने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रही है, हर जगह वैल्यू अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है, बताना पड़ेगा आपको। फुरियर स्पेस में सिर्फ इतना बताना है कि हर जगह है ही नहीं, सिर्फ एक जगह है, और उसकी वैल्यू जो है, एरिया की वैल्यू अल्फा है। दिस हैज got lot of consequences where memories are involved, you want to use less memory while simulation and all. So this finds lot of application there. So the function which was represented by so many points can be represented simply by one point. It is present at one point and absent at all other points. ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब हम शुरुआत करते हैं सिंपल फंक्शंस की बात करते हैं, तो सिंपल फंक्शन में पहला फंक्शन अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो दूसरा फंक्शन मेरा होना चाहिए साइन या कोसाइन। ये सबसे सिंपल फंक्शंस है, राइट? सो लेट अस डू इट फॉर साइन। लेट अस डू इट फॉर साइन फंक्शन। So if I take ht is equal to a sine 2 pi f naught t. So please understand this also, that we have two types of frequencies. One is present in the signal, that is signal frequency f naught, and another is f, that is Fourier frequency, that is a bit abstract frequency, right? तो ये f naught जो है ये तुम्हारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। तो कैसा बनेगा रियल स्पेस में? कुछ ऐसा। Here there is no need of function being periodic. Like here t is defined in whole of the space minus infinity to plus infinity. ठीक है? अब जब मुझे इसका फुरियर, तो ये हो गया a, this is h of t, this is t, and what is this and this point? So please understand, this is, this whole thing will become 2 pi, then this will become 0. So that means 2 pi f naught t will become 2 pi, then this graph will come here. So that means what is the value of t? It is 1 by f naught. So अगर यहाँ पे टाइम एक्सिस लिख रहे हो तो what is the value of t? 1 upon f naught, and here
minus 1 by f naught. So the sampling is being done here, right? So ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और एच एफ लिखो अब. एच एफ विल बी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए साइन ऑफ 2 pi f naught t e to the power minus j 2 pi f t and dt. So this is f naught t and this is f t. So don't forget these two different frequencies. This one is, first one is signal frequency and this one is Fourier frequency. So what will be the value of HF? It will be 1 by 2j integral minus infinity to plus infinity e to the power j 2 pi f naught t minus e to the power minus j 2 pi f naught t into e to the power minus j 2 pi f t and dt. I have used Euler's formula for sine of x is equal to 1 upon 2 iota e to the power ix minus e to the power minus ix. Okay, so this will become h of f is equal to 1 by 2j integral minus infinity to plus infinity e to the power minus j 2 pi f minus f naught t minus e to the power minus j 2 pi f plus f naught t and dt. Now you can understand why I was doing that. It will become 1 by 2j and a. This will become delta function f minus f naught minus delta function f plus f naught. So this will become minus j into a by 2 into delta function f plus f naught minus delta function f minus f naught. And this I have used. ये यूज कर लिया मैंने. तो अब प्लॉट करें. तो जब प्लॉट करेंगे तो it will become minus f naught plus f naught. This will be imaginary axis and delta function. Please see, जो f naught वाला delta function है वो नेगेटिव है और जो माइनस f naught वाला है वो पॉजिटिव. When you see the position of delta function, this is f is equal to f naught. इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है
this is f is equal to minus f naught, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, and when I write here, this is axis, imaginary axis. When I write here a by 2, please remember this is just area of that. This is not the height, because height of delta function is infinity. समझ आ रहा है? So again I am telling you कि ये जो मैं a by 2 यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या है? एरिया है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन है ना, तो हाइट तो इन्फिनिटी है बट एरिया कंजर्व है, तो एरिया जो सामने लिखा हुआ है वो हो जाता है। ठीक है, यहां से एक और बड़ी अच्छी बात निकल के आ रही है, जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो जो यहां मिल रहा है ये भी ऑड है। You can see this is also symmetric about this axis. This is also odd. And please understand that if your function is odd, you will get the Fourier transformation as imaginary and odd. And if your function is even, then you get real and even. If your function is odd, then you get imaginary and odd. And if your function is even, then you get real and even. ओके, इस चीज को हम बड़े सिंपल मैथमेटिक्स से देख भी सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू सी दिस यूजिंग सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन actually understand this. Suppose I have a function which is ht e to the power minus j 2 pi ft and dt, right? This is my transformation. So when I write this, it becomes minus infinity to plus infinity ht cos j 2 pi ft minus j cos 2 pi ft minus j ht sin 2 pi ft and dt. I can break down using Euler's equation. I can break it, and then what it becomes, please see, if your ht is even, then this will become even function and this will become odd function, even into odd. So this will go to 0. So only real integral will remain. And if your ht is odd, then odd into even will become odd. This will be gone, and this odd into odd will become even. This will survive with j. So इसलिए देखो मैंने लिखा है कि when you have odd function, you have imaginary and odd, and if you have even function, you have real and even. So जो odd even properties मैं Fourier series में सिखाता हूँ, उसका यूज देख रहे हो कैसे हो रहा है? So अभी तक तो कितनी बार यही सब क्वेश्चन आया है, साइनोसॉइडल है, your function is sinusoidal, its amplitude is a, what will be the amplitude in Fourier space? A by 2. ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, and which is evident. Nothing, no Fourier thing is required to do this. Only properties of odd function and even function is required to do this. And please understand that if your ht is complex,
if your st is a complex function, then you will get a complex Fourier transformation. Now things will survive then, right? So if you have neither even nor odd function here, suppose really function हो, but it is neither even nor odd, इसको real के केस में भी देखो, then it will become complex and neither even nor odd. And please understand that if the function is odd, its Fourier transformation is odd. If the function is even, its Fourier transformation is even. If the function is neither even nor odd, its Fourier transformation is also neither even nor odd. These things are followed, right? So अब एक immediate question आपके लिए बनता है जो आप तुरंत करके देखो और plot करो, that is what is the Fourier transformation of a cos 2 pi f naught t? What is the Fourier transformation of this? Let us do it quickly. तो ये एक फंक्शन है, इसका पहले प्लॉट देखो कैसा होगा. इसका प्लॉट होगा t is equal to 0 and let us take a magnitude also, right? Beta ले लेते हैं, so it will become beta and it will fall like this, it will become, and this will become ht and this will become t. This is the graph of the given function and we have to write its Fourier transformation. So t less than, and see nothing like periodic, right? It extends from minus infinity to plus infinity. So that is the difference between Fourier series and transformation. So there you have periodic or piecewise periodic function, and here you have a function which extends from minus infinity to plus infinity, right? और hf लिखो जरा. hf will be equal to minus infinity to plus infinity beta e to the power minus alpha t e to the power minus j 2 pi ft and dt. And this integral is very simple. It will be only from 0 to infinity because less than minus infinity to that function is 0. So it will become beta e to the power 0 to infinity e to the power minus alpha plus j 2 pi f t and dt. Please understand this is just a constant for this. Integral में हमेशा ध्यान से देखो कि what is variable. What is variable in this integral? T. So what is constant? The rest of the thing is constant. So let us put it like this. When you integrate it, it will become beta e to the power minus alpha plus j 2 pi ft by minus alpha plus j 2 pi f integral 0 to infinity. So this will become, now please understand that e to the power minus infinity is equal to 0. And here I must tell that alpha is positive, otherwise we can't integrate. So जब आप upper limit रखोगे, ध्यान से देखो, you have two terms. Please see this here on the board. You have two terms, e to the power minus alpha and e to the power minus j 2 pi ft, right? E to the power minus alpha t, one term, and e to the power minus j 2 pi ft. And when t goes to infinity, the first term e to the power minus alpha infinity becomes 0. The second one is not, because cos of large number will also fall between minus 1 to 1 and sine of some large number will also fall between minus 1 to 1. Cos और sine के अंदर कुछ भी रख दोगे, that will be bounded, that will be between minus 1 to 1. But this term e to the power minus alpha t, this will fall to 0. तो ये जो alpha infinity है, alpha greater than 0 है, this is making this
upper limit 0, so it will become minus beta by alpha plus j 2 pi f, and 0 minus 1, and hence it will become beta by alpha plus j 2 pi f. This is your Fourier transformation. Now what is variable here? F. Fourier स्पेस में वेरिएबल क्या है? F. रियल स्पेस में वेरिएबल क्या था? T. अब इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से मैं लिखना चाहूंगा, क्योंकि j डिनोमिनेटर में है, तो आई शुड पुट इट इन न्यूमरेटर, सो इट विल बिकम बीटा अल्फा माइनस j 2 pi f अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 4 pi स्क्वायर f स्क्वायर, so it will become alpha beta by alpha square plus 4 pi square f square minus j beta 2 pi f upon alpha square plus 4 pi square f square. So this was neither even nor odd function, and clearly the result is complex. And as I have promised that we should use every part of this Fourier function. Fourier function में रियल पार्ट को अलग से यूज कर सकते हो, दिस इज रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट को अलग से यूज कर सकते हो, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. एंड as in the case of complex number, what are the ingredients of a complex number? Real part, imaginary part, modulus of that, and phi. ये सारी चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, and they all will represent different kind of signals. उनके कॉम्बिनेशन से सिग्नल बना सकते हो. So if you just plot the real part, कॉम्प्लेक्स का इसी तरह से यूज करते हैं. मान लो रियल पार्ट का मैं प्लॉट करूं, तो यू कैन सी इट इज लॉरेंजियन फंक्शन. कैसा है ये? सम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का ही तो है. सो द ग्राफ इज लाइक दिस. सो दिस इज रियल ऑफ एफ वर्सेस एफ, एंड एट एफ इज इक्वल टू 0 it will become beta by alpha. Even function. Real, you had a neither even nor odd function, but the real part of that function is even function. उसमें भी even का ingredient present. अगर मैं imaginary वाले part को ध्यान से देखूं, imaginary देखो जरा ध्यान से. क्या? नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो. सो अगर मैं imaginary वाले part को देखूं, imaginary of f versus f, then what will happen? Please see. At f is equal to 0, this will, and this is odd function. Can you see that? f ऊपर है ना? It is odd function. So at f is equal to 0, it is 0. But as f increases, the function will become negative, because coefficient is negative. Please see this, right? Plus here and minus here, right? तो जैसे ही तुम बढ़ोगे आगे, it will become negative. But finally, f square will dominate. So at a small value of f square will become very small. You can neglect it. So it will go like f, which is like a linear graph, minus x type graph. So it will go like this. बट जैसे ही थोड़ा सा 1 को क्रॉस करोगे, एफ स्क्वायर कहेगा मैं भी हूं. इट विल स्टार्ट डोमिनेटिंग, और एफ की वैल्यू लार्ज वैल्यू पे 0 हो जानी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है. तो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग and then immediately fall because of this. At large value it will become 0. And because this is odd function, it will be symmetric about this axis. So in negative domain, it will be like this, and then it will fall like this.
You can calculate the maximum and minimum values using maxima and minima. And what about the tan phi thing? So if I write the tan of phi, it will be this by this. Denominator will be cancelled. Numerator में beta cancel. तो minus 2 pi f by alpha. So minus 2 pi f by alpha. Right? अब इसका जब प्लॉट करोगे, phi will become tan inverse of 2 pi by alpha f. Please see this. When at f is equal to 0, tan inverse 0 is 0. And at f is equal to infinity, tan inverse infinity becomes pi by 2. And because of this negative sign, it will be like this, and it will be like this. And this will be the value of phi and the value of f. So at 0 it is 0, and it will saturate to the value tan inverse infinity. It will become pi by 2 and minus pi by 2. Nice. ऐसा लग रहा था इसमें इतनी चीजें छुपी हुई हैं. And that is the beauty of good books. This is the first example of Brigham. इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूँ कि आपको किताब खोल के थोड़ा ही पोर्शन देखो, लेकिन अच्छी किताब का देखना चाहिए. और नेक्स्ट है कि अगर मैं इसका टोटल मैग्नीट्यूड प्लॉट कर लूं, तो मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ एच एफ, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर. तुम देखोगे स्क्वायर करते इवन फंक्शन हो जाएगा, एंड इट विल बी ऑल्सो लाइक दिस, द रियल पार्ट. अब देख लो कितने सारे सिग्नल्स निकल के आ गए तुम्हारे सामने. सो let me finish the class today, and you have class test ready. Just have a glass of water and then you can start your class test. ठीक है? Thank you.